शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। प्राणानायम्य भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदैव लक्ष्मीपतेः वाणीपतेः गौरीपतेः अंघ्रियुगं स्मरामि। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् साम्बम् ईशानं सः बाह्य आभ्यन्तर शुचिः मानसं वाचिकं कर्मणा समुपार्जितं पापं तद्श्री शंभु स्मरणेन एव विपोहति न संशयः। ओं शिव शंभोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलौयुगे प्रथमे पादे जम्बुद्वीपस्य भारतवर्षस्य उपद्वीपाख्ये स्वर्णप्रस्थाख्ये सिंहपुरी नामदेशे अस्मिन् वर्तमाने प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री पराभवा नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ अस्मिन् ऋषभमासे अस्मिन् दिने रविवासरे शुक्लपक्ष प्रथम्यां शुभतिथौ कृत्तिका नक्षत्रयुक्त शुभदिने अस्मिन् दिन विशेष कृत्तिका पूजा यजमानानां श्री भरतमणि भरत उत्तरम ऐलिशा आश्लेषा मलर्कोडी अनुषम प्रकाश पूराडम दर्शिनी पूर्वप्रोष्ठपदा लया प्रकाश रोहिणी दिनेश पूरम उत्तिरमूर्ति कृत्तिका रूपावती आइल्यम रेचली अविटम काया बिजी सुरेश श्रविष्ठा मंजू सुव्या चदभिषेक देवकी दीप्ति तिरुवोणम दिया रोहित विशाखम अभिलाष विजय कुमार फ्रांस वर्विल आंद्रेस स्मोलिस्की फ्रांस वर्विल अनुराधा आंद्रेस स्मोलिस्की भरणी व्लाडस्लो स्मोलिस्की अंबट स्मोलिस्की कविता सोमशेखरन जिग्नेश पांड्या तिरुवोणम कविता सोमशेखरन श्रविष्ठा सौम्या जिग्नेश उत्तरटादि साईराम जिग्नेश रेवती मार्टिना राधा स्टम रघुनाथन जी पिल्ले रघुनाथन कृत्तिका वसंत कुमारी पूराडम शरण रघुनाथन चदयम किशांत मणिकंठन मकेरियम माधवरावु गुडिपति माधवरावु उत्तराषाढ़ लक्ष्मी प्रसन्ना भरणी श्रीकर रोहिणी सन्निधि ज्येष्ठा आतिरा प्रदीप कुमार अनुषम सचिता उत्तरम पवन अनुषम आतिरा आइल्यम नक्षत्रयुक्तायाः सरला नायर हरीश उत्तराडम गिरीश उत्तराडम सविन मकेरियम जस्ना होस्का लिली नटराजन जस्ना लिली नटराजन पूर्वप्रोष्ठपदा आशोर उत्तरम मिला अनुषम जनेश रोहिणी सच्चिदानंदम पूर्वभाल्गुनी लक्ष्मी उत्तराषाढ़ उमा पूर्वभाद्रपदा जिम पुष्या शामिनी मूर्ति धनिष्ठा शंकर ज्येष्ठा ट्रिक्सी पुनर्वसु एल्सा मृगशीर्षा तानिया मखा सच्चिदानंदम सुदीपधरन पूर्वप्रोष्ठपदा सूर्याधरन शतभिषक शैला सुंदर श्रविष्ठा सैमा शिवन सैमा पूयम विजय कुमार विशाखम धनुषा पूर्वप्रोष्ठपदा कृष्णन उत्तराडम रूपावती मुत्तु प्रकाशपुरम दर्शिनी पूर्वप्रोष्ठपदा लया प्रकाश रोहिणी दिनेशपुरम गीता संतोष आदित्य आश्लेषा गीता पूराडम रूपावती मुत्तु रूपावती आश्लेषा उत्तिरमूर्ति कृत्तिका काया रंची नामधेयस्य उषा बालचंद्रन नायर बालचंद्रन तिरुवातिरा उषा उत्तराडम जननी पूर्वप्रोष्ठपदा
नंदिनी पूरम श्याम भरणी सुरेश मेनोन कात्यायनी रुद्रन सुरेश मेनोन शतभिषक सुरेश मेनोन मकेर्यम नक्षत्रयुक्तस्य कात्यायनी पूर्वपृष्ठपदा विशाल पूरम केशवहस्तम रमणी शतभिषक समुद्रराजू नवीन कुमार अनुषम शिवदास मकम शोभना पूर्वपृष्ठपदा तमिल सेल्वी उत्तराडम सापू स्वाति अच्युत प्रसादम भरणी अच्युत कृतिका अनुग्रह कृतिका बालसुब्रह्मण्यमुत्रम इंद्रादेवी अनुषम दर्शन पूर्वपृष्ठपदा दर्शिनी उत्तरटादी नक्षत्रयुक्तायाः चित्रा शेखर शेखर पूर्वपृष्ठपदा चित्रादेवी पुष्यम साथिका शतभिषक सुगतन अश्वनी जोसेफ वास्लो कासिनी ग्रेग जॉन जूली रोज शरण्या नमः शिवायम केटई जयलक्ष्मी उत्तरम सरस्वती मकम नमः शिवाय मनुषम अरुण आइल्यम आकाश तिरुवोणम मीरा पूर्वपृष्ठपदा मल्लिका श्रविष्ठा श्रीविद्या मकेर्यम सिद्धार्थ आरुद्र अमर चित्रा प्रीचा पूराडम सचित मेनोन रोहिणी रेशमा मेनोन स्वाति अमृत मेनोन अनुषम अन्युता मेनोन पुनर्दम सतीश तिरुवात्रा बीना मेनोन स्वाति अखिलेश मेनोन श्रविष्ठा अजित मेनोन मूलम गिरिजा मेनोन पूर्वपृष्ठपदा सुनील मेनोन स्वाति ममता मेनोन तिरुवोणम अमृता मेनोन उत्तराडम क्लॉडिया Rodriguez Alves Makha, Sylvia Rodriguez Alves Sor, Paula Rodriguez Alves Sor, Flavino Rodriguez Alves, Mart Simblist, Navin Vasan, Ranjan Puyam, Navin Uttradam, Seema Astam, Diksha Amrita Ashwati, Ajay Dharan Moolam, Anusha Dharan Rohini, Eknath Moolam, Shama Dharan Tiruvonam, Sagar Dharan Puradam, Shashi Revati, Sandhya Kritika, Kristen Speakman, शाना बाबू तिरुवोणम गुरुदेव कौरमूलम श्रीविद्या मकम विनय पूराडम हेमलता शिवकुमार चंद्रमूर्ति पूर्वपृष्ठपदा देव पवन उत्तरम हेमलता पुष्य नक्षत्रयुक्तायाः योग प्रकाश हस्तम रंजिनी अनुषम अमृता मृगशीर्षम सुरेश पूराडम उषा कुमारी हस्तम स्नेहा तिरुवोणम संजय मकेर्यम नक्षत्रयुक्तायाः सर्वेषां आत्मनः कायिक वाचिक सांसर्गिक ज्ञादा ज्ञाद स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा सकल पापक्षयार्थम क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम समस्त मंगल अवाप्त्यर्थम श्री मातुः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थम अस्मिन् दिने कृत्तिका नक्षत्र विशेष गुरुपादुका दीपपूजादिकम् अद्य करिष्ये। ओम सुमुखैश्च एकदन्दैश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिप धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः। ओम श्री महागणपतये नमः। अमृतेश्वर्यै नमः।
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै ॐ नमः। हरिं नमः। हरिं श्रीं क्लीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं ऐं क्लीं सौह्रीं भं भद्रकाली नमः। नमः। ॐ नमः। ॐ नमः। सोऽहं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। सकलदेवतास्वरूपिण्यै नमः। अमृतेश्वर्यै नमः। एहि आगच्छ आगच्छोम् आवाहयामि नमः। आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निरुद्धो भव सान्निध्यं कुरु कुरु प्रसीद प्रसीद। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। गां हृदयाय नमः। गीं शिरसे स्वाहा। गुं शिखायै औषड्गैं कवचाय गौ नेत्रत्रयाभ्याम् औषड्गास्त्राय भट्। आसनमिदं स्वागतमस्तु। पाद्यमिदम् अर्घ्यमिदम् आचमनीयमिदं मधुपर्कमिदं पुनराचमनीयमिदम्। हरिं श्रीं गुं गुरुपादुकाभ्यां नमः। 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 हरिं श्रीं कायीलह्रीं हसकहलह्रीं सकलह्रीं श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। ॐ नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुपादुकाभ्यां नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुपादुकाभ्यां नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुपादुकाभ्यां नमः। ॐ श्री महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। यं वायुवात्मना धूपम् आख्यापयामि नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। श्रीं महादेव्यै नमः। रम् अग्न्यात्मना दीपं सन्दर्शय। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ज्येष्ठायै नमः। ॐ हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। हरिं श्रीं गुं गुरुपादुकाभ्यां नमः। पाद्यमिदम् अर्घ्यमिदम् आचमनीयम्।
हरे श्रीं नेत्रत्रयाभ्याम् औषधम् हरे श्रीं ॐ गुरुभ्यो नमः महादेव्यै नमः सत्यं दर्तुयेन परुषं जामि भुवस्वरो अमृतोऽवस्तरणमस्ति रसनायै नमः ॐ अमृतेश्वर्यै नमः निवेदयामि भवदे जुषाणेदं हविर्शिवे ॐ ऐं प्राणाय स्वाहा क्लीं अपानाय स्वाहा सौः व्यालाय स्वाहा सौः उदानाय स्वाहा ऐं क्लीं सौः समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ध्यायामो धवलावगुण्डनवतीं तेजोमयीं नैष्टिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं सङ्कीर्तनालापिनीं श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकामीश्वरीम् ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ पूर्णब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः। ॐ सच्चिदानन्दमूर्तये नमः। ॐ आत्मारामाग्रगण्यायै नमः। ॐ योगलीनान्दरात्मने नमः। ॐ अन्तर्मुखस्वभावायै नमः। ॐ तुर्यतुङ्गस्थलीजुषे नमः। ॐ प्रभामण्डलवीतायै नमः। ॐ दुरासदमहौजसे नमः। ॐ त्यक्तदिग्वस्तुकालादिसर्वावच्छेदराशये नमः। ॐ सजातीयविजातीयस्वीयभेदनिराकृते नमः। ॐ वाणीबुद्धिविमर्यायै नमः। ॐ शश्वतव्यक्तवर्त्मने नमः। ॐ नामरूपादिशून्यायै नमः। ॐ शून्यकल्पविभूतये नमः। ॐ षडैश्वर्यसमुद्रायै नमः। ॐ दूरीकृतषडूर्मये नमः। ॐ नित्यप्रबुद्धसंशुक्तनिर्मुक्तात्मप्रभामुचे नमः। ॐ कारुण्याकुलचित्तायै नमः। ॐ त्यक्तयोगसुषुप्तये नमः।
ॐ केरलक्ष्मावतीर्णायै नमः। ॐ मानुषस्त्रीवपुर्भृदे नमः। ॐ धर्मिष्ठसुगुणानन्ददमयन्ती स्वयंभुवे नमः। ॐ मातापितृचिराचीर्णपुण्यपौरफलात्मने नमः। ॐ निशब्दजननी गर्भनिर्गमाल्फुदकर्मणे नमः। ॐ काली श्रीकृष्णसङ्घाष कोमलश्यामलद्विषे नमः। ॐ चिरनष्टपुनर्लब्धभार्गवक्षेत्रसम्पदे नमः। ॐ मृतप्रायभृगुक्षेत्रपुनरुत्थिततेजसे नमः। ॐ सौशील्यादिगुणाकृष्टजङ्गमस्तावरालये नमः। ॐ मनुष्यमृगपक्ष्यादिसर्वसंसेविधाङ्ग्रहे नमः। ॐ नैसर्गिकदयातीर्थस्नानक्लिन्नान्दरात्मने नमः। ॐ दरिद्रजनदाहस्तसमर्पितनिजान्दसे नमः। ॐ अन्यवक्त्रप्रभुक्तानपूरितस्वीयकुक्षये नमः। ॐ सम्प्राप्तसर्वभूतात्मस्वात्मसत्तानुभूतये नमः। ॐ अशिक्षितस्वयं स्वान्तस्फुरत्कृष्णविभूतये नमः। ॐ अच्छिन्नमधुरोदारकृष्णलीलानुसन्धये नमः। ॐ नन्दात्मजमुखालोक नित्योत्कण्डितचेतसे नमः। ॐ गोविन्दविप्रयोगाधिदावदग्धान्तरात्मने नमः। ॐ वियोगशोकसम्मुच्छामुहुर्पतितवर्ष्मणे नमः। ॐ सारमेयादिविहितशुश्रूषालब्धबुद्धये नमः। ॐ प्रेमभक्तिबलाकृष्टप्रादुर्भावितशार्गिणे नमः। ॐ कृष्णालोकमहाह्लादध्वस्तशोकान्तरात्मने नमः। ॐ काञ्चीचन्द्रकमञ्जीरवंशीशोभिस्वभूदृशे नमः। ॐ सार्वत्रिकऋषिकेशसान्नित्यलहरीस्पृशे नमः। ॐ सुस्मेरतन्मुखालोकविस्मेरोद्भुल्लदृष्टये नमः। ॐ तत्कान्तियमुनास्पर्शहृष्टरोमाङ्गयष्ठये नमः। ॐ अप्रदीक्षितसम्प्राप्तदेवीरूपोपलब्धये नमः। ॐ पाणिपद्मसुभद्वीणाशोभमानाम्बिकादृशे नमः। ॐ देवी सद्यस्तिरोधानतापव्यदितचेतसे नमः। ॐ दीनरोदननिर्घोषदीर्णधिक्कर्णवर्त्मने नमः। ॐ त्यक्तानपाननिद्रादिसर्वदैहिकधर्मणे नमः। ॐ कुररादिसमानीतपक्ष्यपोषितवर्ष्मणे नमः। ॐ वीणानिष्यन्दिसङ्गीतलालितश्रुतिनालये नमः। ॐ अपारपरमानन्दलहरीमग्नचेतसे नमः। ॐ चण्डिकाभीकराकारदर्शनालब्धशर्मणे नमः। ॐ शान्तरूपामृतच्छरी पारणानिर्वृतात्मने नमः। ॐ शारदास्मारकाशेषस्वभावगुणसम्पते नमः। ॐ प्रतिबिम्बितचान्द्रेयशारदोभयमूर्तये नमः। ॐ तन्नाडकाभिनयननित्यरङ्गेतात्मने नमः। ॐ चान्द्रेयशारदाकेलिकल्लोलितसुधाप्तये नमः। ॐ उत्तेजितभृगुक्षेत्रदैवचैतन्यरंहसे नमः। ॐ भूयप्रत्यवरुद्धार्षदिव्यसंस्कारराशये नमः। ॐ अप्राकृताद्भुतानन्दकल्याणगुणसिन्धवे नमः। ॐ ऐश्वर्यवीर्यकीर्तिश्रीज्ञानवैराग्यवेश्मने नमः। ॐ उपाक्तबालगोपालवेशभूषाविभूतये नमः। ॐ स्मेरस्निग्धकटाक्षायै नमः। ॐ स्वैरादिश्युतवेदये नमः। ॐ पिञ्चकुण्डलमञ्जीरवंशिकाकिङ्गिणिभृदे नमः। ॐ भक्तलोकाखिलाभीष्टपूरणप्रीणनेच्छवे नमः। ॐ पीठारूढमहादेवी भावभास्वरमूर्तये नमः। ॐ भूषणाम्बरवेशश्रीदीप्यमानाङ्गयष्ठये नमः। ॐ सुप्रसन्नमुखाम्भोजवराभयदपाणये नमः। ॐ किरीटरशनाकर्णपूरस्वर्णपडिभृदे नमः। ॐ जिह्वालीडमहारोगी बीभत्सव्रणितत्वचे नमः। ॐ त्वग्रोगध्वंसनिष्णादगौराङ्गापरमूर्तये नमः।
ॐ स्तेयहिंसासुरापानाद्यशेषाधर्मविद्विषे नमः। ॐ त्यागवैराग्यमैत्र्यादिसर्वसद्वासनापुषे नमः। ॐ पादाश्रितमनोरूढदुसंस्काररघोमुषे नमः। ॐ प्रेमभक्तिसुधासिक्तसाधुचित्तगुहाजुषे नमः। ॐ सुधामणिमहानाम्ने नमः। ॐ सुभाषितसुधामुचे नमः। ॐ अमृतानन्दमय्याख्यां जनकर्णपुडस्पृशे नमः। ॐ नृप्तदत्तविरक्तायै नमः। ॐ नम्रार्पितबुभुक्षवे नमः। ॐ उत्सृष्टभोगिसङ्गायै नमः। ॐ योगीसङ्गरिरंसवे नमः। ॐ अभिनन्दितदानादिशुभकर्माभिवृद्धये नमः। ॐ अभिवन्दितनिशेषशिरजङ्गमसृष्टये नमः। ॐ प्रोत्साहितब्रह्मविद्यासम्प्रदायप्रवर्तये नमः। ॐ पुनरासादितश्रेष्ठतपोविपिनवृत्तये नमः। ॐ भूयो गुरुकुलवासशिक्षणोत्सुकमेधसे नमः। ॐ अनेकनैष्ठिकब्रह्मचारिनिर्मातुर्वेधसे नमः। ॐ शिष्यसङ्क्रामितस्वीयप्रोज्ज्वलद्ब्रह्मवर्चसे नमः। ॐ अन्देवासिजनाशेषचेष्टापादितदृष्टये नमः। ॐ मोहान्धकारसञ्चारिलोकानुग्राहिरोचिषे नमः। ॐ तमक्लिष्टमनोवृष्टस्वप्रकाशशुभाशिषे नमः। ॐ भक्तशुद्धान्तरङ्गस्थभद्रदीपशिखात्विषे नमः। ॐ सप्रीतिभुक्तभक्तौघन्यर्पितस्नेहसर्पिषे नमः। ॐ शिष्यवर्यसभामध्यध्यानयोगविदिल्सवे नमः। ॐ शश्वलोकहिताचारमग्नदेहेन्द्रियासवे नमः। ॐ निजपुण्यप्रदानान्यपापादानचिकीर्षवे नमः। ॐ वरस्वर्यापनस्वीयनरकप्राप्तिलिप्सवे नमः। ॐ रथोत्सवच्चलत्कन्याकुमारीमर्त्यमूर्तये नमः। ॐ विमोहार्णवनिर्मग्नभृगुक्षेत्रोजिहिर्षवे नमः। ॐ पुनस्सन्दानिदद्वैपायनसत्कुलतन्दवे नमः। ॐ वेदशास्त्रपुराणेतिहासशाश्वतबन्धवे नमः। ॐ मृगुक्षेत्रसमुन्मीलत्परदैवततेजसे नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्ये नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्ये नित्यं नमो नमः। ॐ प्रेमामृतानन्दमय्ये नित्यं नमो नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अतिमधुरचापहस्ताम् अपरिमिताम् आमोदबान्नसौभाग्याम् अरुणाम् अतिशयकरुणाम् अभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे। ॐ ककाररूपायै नमः। ॐ कल्याण्यै नमः। ॐ कल्याणगुणशालिन्यै नमः। ॐ कल्याणशैलनिलयायै नमः। ॐ कमनीयायै नमः। ॐ कलावत्यै नमः। ॐ कमलाक्ष्यै नमः। ॐ कन्मशक्न्यै नमः। ॐ करुणामृतसागरायै नमः। ॐ कदम्बकाननावासायै नमः। ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः। ॐ कन्दर्पविद्यायै नमः। ॐ कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणायै नमः। ॐ कर्पूरवीडिसौरभ्यकल्लोलितकगुप्तडायै नमः। ॐ कलिदोषहरायै नमः। ॐ कञ्जलोचनायै नमः।
ॐ कम्रविग्रहायै नमः। ॐ कर्मादिसाक्षिण्यै नमः। ॐ कारयित्र्यै नमः। ॐ कर्मफलप्रदायै नमः। ॐ एकाररूपायै नमः। ॐ एकाक्षर्यै नमः। ॐ एगानेगाक्षरकृतये नमः। ॐ एदत्यदित्यनिर्देश्यायै नमः। ॐ एगानन्दचिताकृतये नमः। ॐ एवमित्यागमाबोध्यायै नमः। ॐ एकभक्तिमदर्चिदायै नमः। ॐ एकाग्रचित्तनिर्ध्यातायै नमः। ॐ एषणारहिताधृतायै नमः। ॐ एलासुगन्धिचिगुरायै नमः। ॐ येनकूडविनाशिन्यै नमः। ॐ एकभोगायै नमः। ॐ एकरसायै नमः। ॐ एकैश्वर्यप्रदायिन्यै नमः। ॐ एकादपत्रसाम्राज्यप्रदायै नमः। ॐ एकान्तपूजितायै नमः। ॐ येधमानप्रभायै नमः। ॐ एकदनेकजगदीश्वर्यै नमः। ॐ एकवीरादिसंसेव्यायै नमः। ॐ एकप्राभवशालिन्यै नमः। ॐ ईकाररूपायै नमः। ॐ ईशित्र्यै नमः। ॐ ईप्सितार्थप्रदायिन्यै नमः। ॐ ईदृग्वित्तिविनिर्देश्यायै नमः। ॐ ईश्वरत्वविधायिन्यै नमः। ॐ ईशानादिब्रह्ममय्यै नमः। ॐ ईशित्वादष्टसिद्धिदायै नमः। ॐ ईक्षित्र्यै नमः। ॐ ईक्षणसृष्टाण्डकोट्यै नमः। ॐ ईश्वरवल्लभायै नमः। ॐ ईढिदायै नमः। ॐ ईश्वरार्थाङ्गशरीरायै नमः। ॐ ईशाधिदेवतायै नमः। ॐ ईश्वरप्रेरणकर्यै नमः। ॐ ईशताण्डवसाक्षिण्यै नमः। ॐ ईश्वरोत्सङ्गनिलयायै नमः। ॐ ईदिबाधाविनाशिन्यै नमः। ॐ ईहाविरहितायै नमः। ॐ ईशशक्त्यै नमः। ॐ ईशल्स्मिताननायै नमः। ॐ लकाररूपायै नमः। ॐ ललितायै नमः। ॐ लक्ष्मीवाणीनिषेवितायै नमः। ॐ लाकिन्यै नमः। ॐ ललनारूपायै नमः। ॐ लसद्दाडिमपाडलायै नमः। ॐ लसन्दिकालसल्भालायै नमः। ॐ ललाडनयनार्चितायै नमः। ॐ लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्ग्यै नमः। ॐ लक्षकोट्यण्डनायिकायै नमः। ॐ लक्ष्यार्थायै नमः। ॐ लक्षणागम्यायै नमः। ॐ लब्धकामायै नमः। ॐ लतातनवे नमः। ॐ ललामराजदलिकायै नमः। ॐ लम्बिमुक्तालताञ्जितायै नमः। ॐ लम्बोदरप्रसवे नमः। ॐ लभ्यायै नमः। ॐ लज्जाढ्यायै नमः। ॐ लयवर्जितायै नमः। ॐ ह्रीङ्काररूपायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारनिलयायै नमः। ॐ ह्रीं पदप्रियायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारबीजायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारमन्द्रायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारलक्षणायै नमः। ॐ ह्रीङ्कारजपसुप्रीदायै नमः। ॐ ह्रीमत्यै नमः। ॐ ह्रीं विभूषणायै नमः। ॐ ह्रीं शीलायै नमः। ॐ ह्रीं पदाराध्यायै नमः। ॐ ह्रीं गर्भायै नमः। ॐ ह्रीं पदाभिधायै नमः। ॐ ह्रींकारवाच्यायै नमः। ॐ ह्रींकारपूज्यायै नमः। ॐ ह्रींकारपीठिकायै नमः। ॐ ह्रींकारवेद्यायै नमः। ॐ ह्रींकारचिन्त्यायै नमः। ॐ ह्रीं नमः। ॐ ह्रीं शरीरिण्यै नमः। ॐ हकाररूपायै नमः। ॐ हलधृत्पूजितायै नमः। ॐ हरिणीक्षणायै नमः। ॐ हरप्रियायै नमः। ॐ हराराध्यायै नमः। ॐ हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितायै नमः।
ॐ हयारूढासेविदाङ्घ्रे नमः। ॐ हयमेधसमर्चिदायै नमः। ॐ हर्यक्षवाहनायै नमः। ॐ हंसवाहनायै नमः। ॐ हतदानवायै नमः। ॐ हत्यादिपापशमन्ये नमः। ॐ हरिदश्वादिसेवितायै नमः। ॐ हस्तिकुम्भतुङ्गकुजायै नमः। ॐ हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गनायै नमः। ॐ हरिद्राकुङ्कुमादिग्धायै नमः। ॐ हर्यश्यादमरार्चिदायै नमः। ॐ हरिकेशसख्यै नमः। ॐ हादिविद्यायै नमः। ॐ हालामदोल्लासायै नमः। ॐ सकाररूपायै नमः। ॐ सर्वज्ञायै नमः। ॐ सर्वेश्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ सर्वकर्त्रे नमः। ॐ सर्वभद्रे नमः। ॐ सर्वहन्द्रे नमः। ॐ सनातनायै नमः। ॐ सर्वानवद्यायै नमः। ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः। ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः। ॐ सर्वात्मिकायै नमः। ॐ सर्वसौख्यदात्रे नमः। ॐ सर्वविमोहिन्यै नमः। ॐ सर्वाधारायै नमः। ॐ सर्वगतायै नमः। ॐ सर्वविगुणवर्जितायै नमः। ॐ सर्वारुणायै नमः। ॐ सर्वमात्रे नमः। ॐ सर्वभूषणभूषितायै नमः। ॐ ककारार्थायै नमः। ॐ कालहन्द्रे नमः। ॐ कामेश्यै नमः। ॐ कामिदार्थदायै नमः। ॐ कामसञ्जीवन्यै नमः। ॐ कल्यायै नमः। ॐ कठिनस्तनमण्डलायै नमः। ॐ करभोरवे नमः। ॐ कलानादमुख्यै नमः। ॐ खजचिदाम्बुदायै नमः। ॐ कटाक्षस्यन्दिकरुणायै नमः। ॐ कपालीप्राणनायिकायै नमः। ॐ कारुण्यविग्रहायै नमः। ॐ कान्तायै नमः। ॐ कान्तिभूतजपावल्यै नमः। ॐ कलालापायै नमः। ॐ कम्बुकण्ठे नमः। ॐ करनिर्जितपल्लवायै नमः। ॐ कल्पवल्लीसमभुजायै नमः। ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चितायै नमः। ॐ हगारार्थायै नमः। ॐ हंसगत्यै नमः। ॐ हाडगाभरणोज्ज्वलायै नमः। ॐ हाराहारिकुजाभोगायै नमः। ॐ हागिन्यै नमः। ॐ हल्यवर्जितायै नमः। ॐ हरिलब्धिसमाराध्यायै नमः। ॐ हडाल्कारहतासुतायै नमः। ॐ हर्षप्रदायै नमः। ॐ हविर्भोक्त्रे नमः। ॐ हार्दसन्दमसापहायै नमः। ॐ हल्लीसलास्यसन्तुष्टायै नमः। ॐ हंसमन्दार्तरूपायै नमः। ॐ हानोबदानविनिर्मुक्तायै नमः। ॐ हर्षिण्यै नमः। ॐ हरिसोदर्यै नमः। ॐ हाहाहूहू मुखस्तुत्यायै नमः। ॐ हानिवृत्तिविवर्जितायै नमः। ॐ हय्यङ्गवीनहृदयायै नमः। ॐ हरिगोपारुणांशुकायै नमः। ॐ लकाराख्यायै नमः। ॐ लतापूज्यायै नमः। ॐ लयस्त्युद्युद्भवेश्वर्यै नमः। ॐ लास्यदर्शनसन्तुष्टायै नमः। ॐ लाभालाभविवर्जितायै नमः। ॐ लिङ्गेतराज्ञायै नमः। ॐ लावण्यशालिन्यै नमः। ॐ लघुसिद्धिदायै नमः। ॐ लाक्षारससवर्णाभायै नमः। ॐ लक्ष्मणाग्रजपूजितायै नमः। ॐ लभ्येतरायै नमः। लब्धभक्तिसुलभायै नमः। ॐ लाङ्गलायुधायै नमः। ॐ लग्नचामरहस्तश्रीशारदापरिवीचितायै नमः। ॐ लज्जापदसमाराध्यायै नमः। ॐ लम्बडायै नमः। ॐ लकुलेश्वर्यै नमः। ॐ लब्धमानायै नमः। ॐ लब्धरसायै नमः। ॐ लब्धसम्पत्समुन्नत्यै नमः। ॐ ह्रींकारिण्यै नमः। ॐ ह्रींकाराध्यायै नमः। ॐ ह्रीमध्यायै नमः।
ॐ ह्रीं शिखामणये नमः। ॐ ह्रींकारकुण्डाग्निशिखायै नमः। ॐ ह्रींकारशशिचन्द्रिकायै नमः। ॐ ह्रींकारभास्कररुचये नमः। ॐ ह्रींकाराम्भोदचञ्चलायै नमः। ॐ ह्रींकारकन्दाङ्कुरिकायै नमः। ॐ ह्रींकारैकपरायणायै नमः। ॐ ह्रींकारदीर्घिकाहंस्यै नमः। ॐ ह्रींकारोद्यानकेकिन्यै नमः। ॐ ह्रींकारारण्यहरिण्यै नमः। ॐ ह्रींकारालवालवल्यै नमः। ॐ ह्रींकारपञ्जरशुक्यै नमः। ॐ ह्रींकाराङ्गणदीपिकायै नमः। ॐ ह्रींकारकन्दरासिंह्यै नमः। ॐ ह्रींकाराम्भोजभृङ्गिकायै नमः। ॐ ह्रींकारसुमनोमाध्व्यै नमः। ॐ ह्रींकारतरुमञ्चर्यै नमः। ॐ सकाराख्यायै नमः। ॐ समरसायै नमः। ॐ सकलागमसंस्तुतायै नमः। ॐ सर्ववेदान्ततात्पर्यभूम्यै नमः। ॐ सदसदाश्रयायै नमः। ॐ सकलायै नमः। ॐ सच्चिदानन्दायै नमः। ॐ साध्यायै नमः। ॐ सद्गतिदायिन्यै नमः। ॐ सनकादिमुनिध्येयायै नमः। ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः। ॐ सकलाधिष्ठानरूपायै नमः। ॐ सत्यरूपायै नमः। ॐ समाकृतये नमः। ॐ सर्वप्रपञ्चनिर्मात्रे नमः। ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः। ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः। सङ्गहीनायै नमः। ॐ सगुणायै नमः। ॐ सकलेष्टदायै नमः। ॐ ककारिण्यै नमः। ॐ काव्यलोलायै नमः। ॐ कामेश्वरमनोहरायै नमः। ॐ कामेश्वरप्राणनाट्ये नमः। ॐ कामेश्वरोत्सङ्गवासिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरलिङ्गिताङ्गे नमः। ॐ कामेश्वरसुखप्रदाये नमः। ॐ कामेश्वरप्रणयिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरविलासिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरतपस्सिद्ध्यै नमः। ॐ कामेश्वरमनप्रियायै नमः। ॐ कामेश्वरप्राणनाथायै नमः। ॐ कामेश्वरविमोहिन्यै नमः। ॐ कामेश्वरब्रह्मविद्यायै नमः। ॐ कामेश्वरगृहेश्वर्यै नमः। ॐ कामेश्वराह्लादकर्यै नमः। कामेश्वरमहेश्वर्यै नमः। ॐ कामेश्वर्यै नमः। ॐ कामकोटिनिलयायै नमः। ॐ कांक्षिदार्थदायै नमः। ॐ लकारिण्यै नमः। ॐ लब्धरूपायै नमः। ॐ लब्धध्ये नमः। ॐ लब्धवाञ्छिदायै नमः। ॐ लब्धपापमनोदूरायै नमः। ॐ लब्धाङ्गारदुर्गमायै नमः। ॐ लब्धशक्त्यै नमः। ॐ लब्धदेहायै नमः। ॐ लब्धेश्वर्यसमुन्नत्यै नमः। ॐ लब्धवृद्ध्यै नमः। ॐ लब्धलीलायै नमः। ॐ लब्धयौवनशालिन्यै नमः। ॐ लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्यायै नमः। लब्धविभ्रमायै नमः। ॐ लब्धरागायै नमः। ॐ लब्धपदये नमः। ॐ लब्धनानागमस्थित्यै नमः। ॐ लब्धभोगायै नमः। ॐ लब्धसुगदायै नमः। ॐ लब्धहर्षाभिपूरितायै नमः। ॐ ह्रींकारमूर्त्यै नमः। ॐ ह्रींकारसौदशृङ्गकपोतिकायै नमः। ॐ ह्रींकारदुग्धाप्तिसुधायै नमः। ॐ ह्रींकारकमलेन्दिरायै नमः। ॐ ह्रींकारमणिदीपार्चिषे नमः। ॐ ह्रींकारतरुशारिकायै नमः। ॐ ह्रींकारपेडकमणये नमः। ॐ ह्रींकारदर्शबिम्बितायै नमः। ॐ ह्रींकारकोशाशिलदायै नमः। ॐ ह्रींकारस्थाननर्तक्यै नमः। ॐ ह्रींकारशुक्तिकामुक्तामणये नमः। ॐ ह्रींकारबोधितायै नमः।
ॐ ह्रींकारामय सौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिकायै नमः। ॐ ह्रींकारवेदोपनिषदे नमः। ॐ ह्रींकाराध्वरदक्षिणायै नमः। ॐ ह्रींकारनन्दनारामनवकल्पकवल्लर्यै नमः। ॐ ह्रींकारहिमवल्गङ्गै नमः। ॐ ह्रींकारार्णवकौस्तुभायै नमः। ॐ ह्रींकारमन्त्रसर्वस्वायै नमः। ॐ ह्रींकारसौख्यदायै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ पराशक्त्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु ते। ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। अमृतेश्वर्यै नमः। Om Amriteshwari Namaha. Good morning to everyone. We are all a mix of the good and the bad, the positive and the negative. There is no one on earth other than spiritually enlightened souls who is perfect. We can try to hide what is shameful in us by putting on a smooth and very civilized front, but that's only as good as sweeping the dirt under the carpet. We all have shadows, the part of ourselves that we think of as shameful or bad or dark. We cannot run away from our shadow. No matter how fast or how far we run, the shadow will continue to trail us. We need to accept our shadow. Accepting our shadow means being aware of our not so good habits or tendencies. As they say, knowing is half the battle. Unless we know who or what the enemies are, we cannot gain victory over them. In spiritual life, there are 6 enemies, otherwise known as the Shat Ripus. Kama, which is lust or desire. Krodha is anger. Lobha is greed. Moha, delusion. Mada is pride. Matsarya is competitiveness. We call them enemies because they hijack our spiritual growth. Instead of enemies, we could call them impurities. It doesn't matter what kind of spiritual life we lead. Whatever path we walk, whether it's devotion, self-inquiry, or dedicated action, bhakti, jnana, or karma, however we approach God or the spiritual master, all our efforts are aimed at only one thing, and that's self-purification, and that's the bottom line of all spiritual striving. Where are these enemies hiding?
in the mind. It's much easier to eliminate enemies that are out there in the world, but than those that have taken cover inside us. If we don't know how to fight this inner battle, we will hurt ourselves in the process. How to rid ourselves of these enemies in the most practical and sensible way is the question Sage Narada addresses in the next aphorism of the Narada Bhakti Sutra. Tadarpita akhila acharaha sankama krodha abhimana adikam tasmin eva karaniyam. One who has dedicated one's life to God should offer desire, anger, pride, and the like to Him. We cannot forcefully stop negativities from surfacing in the mind. That would be a form of suppression. The easiest way to overcome our weaknesses is, according to the sutra, by offering the mind, which is the seat of negativities, to God. The idea of offering our negativities to God might feel shameful. How do we offer our lust, for example, to God? Does that mean that we make Amma or Krishna the object of our lust? When Narada tells us to offer our anger to God, does he mean that we should use an Amma doll or a photo as our punching bag, for example? Or do we stand before the altar shouting and screaming at her photo? Some people do that. Before we can offer any emotion to God, we must first understand exactly what it is that we are offering. Kama is not just lust. In its largest sense, kama is desire. It's the longing for pleasure, it's emotional craving. It is a yearning for union, beauty, intimacy, or completeness. All of us are familiar with the energies of craving, longing, and yearning. The difference between an ordinary person and a good devotee is that the devotee directs all that longing towards God. A story, I think one that you have heard before. Tulsi Das was so attached to his wife Ratnavali that he could not spend even a day apart from her. Once, when Ratnavali went to her father's house without informing him, Tulsi Das crossed a flooded river at night, using for support a dead body which he thought was a log of wood. When he reached his parents-in-law's house, he saw that it was locked from the inside. Tulsidas climbed into Ratnavali's room by grabbing hold of a huge snake on the wall, thinking it was a rope. Tulsidas imagined his wife would be pleased to see him. Instead, she was completely put off by her husband's excessive attachment to her and scolded him. She said, "My body is just flesh and bones. If you would develop for Lord Rama even half of the love that you have for my filthy body, you would certainly cross the ocean of samsara and attain immortality and eternal bliss." These words were like a slap on his face, waking Tulsidas up from the slumber of the sensual life. He left his wife there and then and dedicated the rest of his life to cultivating devotion for Lord Rama. The energy of longing and craving did not leave Tulsidas, he just channeled it towards God. The same principle applies to all the other negativities like anger and so on. About 25 years ago, a few people told Amma that two brahmacharis, my friend and I, were singing off-key and that we were not good enough to sing backup for Amma. When Amma heard this, she said, "Is that so? In that case, tell them to leave the stage at once." When I heard this, I was extremely hurt. Even though I did not tell Amma anything in person, I funneled all my grief to her mentally. The other brahmachari was hurt and angry. A few days later, I needed to ask Amma a question about one of the ashram magazines, and I went to see her. As fate would have it, the people who had conspired to get me out of the music team were standing near Amma. I asked Amma the question about the magazine.
Amma smiled and said that she likes my voice a lot and that I should sing for her every single time. She ignored my question on the magazine. When my friend, the other brahmachari, learned what had happened, his resentment towards Amma became even more deeply entrenched, and he held fast to his grudge towards her for the next 20-something years. Amma spoke to him various times saying that he should let bygones be bygones, but he refused to yield. He continued doing his seva sincerely, but he could not release the grudge and the anger that he had in his heart. I know this because he spoke to me about this several times. Soon after this, my friend started writing songs of intense longing. The tone of his songs was completely unlike his outward show of anger. He proved to be a writer of uncommon poetic gifts. In due course, Amma started recording his songs. He did not attend any of those recording sessions because of the grudge he had against Amma. Once, while Amma was recording a song that he had written, Amma stopped and said, "I don't know who wrote this song, but whoever wrote it has understood the Radha Bhava, the nature of Radha's longing for Krishna." Coming from Amma, this was high praise indeed, and I shared with him what Amma had said. He was happy to hear it. I then asked him why he did not want to record his own songs with Amma. He repeated the same things that he'd been saying for many years. I jokingly replied that I would conspire with a few other boys to carry him physically to Amma, and there the Divine Mother and her son would reunite. He laughed and said that my fantasy would remain a fantasy for all time. A couple of weeks later, during a break in the recording, Amma spontaneously started singing a song. I assumed it was an old song that I had not heard before. A senior brahmacharini asked Amma, "Which song are you singing, Amma?" Amma shrugged her shoulders and said that she had just made it up. Amma has written and composed many beautiful songs, but to my knowledge, she had not done so in recent years. I've heard that with Amma, the whole process of composing is unpremeditated. Both the words and the tune just flow out of Amma spontaneously. This was the first time I witnessed such a creative birth. It was so effortless that it was awe-inspiring. The brahmacharini asked Amma to sing those 4 lines again. This time, Amma sang those 4 lines, but miming what she was singing. The first line was about playing the flute, and Amma mimed the act of flute playing. And she continued doing so for the rest of the lines. It was enchanting to see Amma in that playful mood. A few of the brahmacharinis wrote down the words of all the 4 lines. Amma then looked at me and asked me, "What is the raga of that song?" I said it was Vrindavana Sarangi, and Amma nodded her head. Amma sang only 4 lines. She said that somebody else should finish writing that song. It was an unusual bhajan, unusual because there is no mention of God at all in this song. The verse is about nature and it ends with an enigmatic riddle. This is how the first verse goes. The honey bee comes flying to sip nectar, and it comes humming a tune as if it were playing a flute. What do you think that flower feels? In the meantime, a few people asked my friend to complete the song that Amma had started composing, and he did in the same meter and spirit. He wrote another 9 verses. Each ended with the same kind of questions. What do you think the tree feels? What do you think the field feels? And so on. Amma liked the new verses, wanted to practice the song, and called a few of us, including my friend, to her room. There, Amma recorded the song with him. Later, she sang it with him on the stage. My friend told me later that when I told him about my dream of seeing him sing with Amma, he'd never in his wildest imagination thought that it would come true. Now he has become reconciled to Amma after 20-something years.
the grudge he held towards her has dissolved. When we direct any emotion towards God, whether it's hatred or love, those emotions become purified and they turn the heart which harbors those emotions into a shrine. This is why Narada says, direct all your negativities to God. Then those very emotions which would otherwise remain setbacks in our spiritual life become stepping stones to God realization. So this sutra is about turning the mind towards God. The next sutra is about transcending the mind. Trirupa bhanga purvakam nityadasa nityakanta bhajanatmakam prema karyam premeva karyam. Having transcended the threefold nature of secondary devotion, one ought to practice constant, loving service to God, like a devoted servant or spouse. Divine love is the goal. Divine love alone is the goal. This sutra, this is number 66, refers to an earlier sutra actually, number 56, in which Sage Narada talks about Gauna Bhakti or secondary devotion. Bhakti that is either tamasic or rajasic or sattvic, dull, restless or calm. That's what he means by the threefold nature of secondary devotion. Once we have risen from these lower levels of bhakti and attained mukhya bhakti or all-consuming love for God, then Narada ji says we should become like a devoted servant or a devoted spouse. Let's look at the devoted servant part first. Recently, Amma recounted a story that she tells from time to time. A boss had 2 workers. One of them was always at work in the fields, trying his best to make sure that the farms were fertile and yielding a good harvest. The other worker was always fawning over the boss, saying flattering things to ingratiate himself into the boss's good books. Amma asks, who do you think is more valuable to the boss? The answer is, of course, the one who is hard at work in the fields. A good servant is one who is obedient in letter and spirit. He listens not just to the words of the master, but also divines the intention behind those words. One of the best exemplars of Dasya Bhakti or servant-like devotion is Hanuman. This is just one instance from his life, one of many instances. When Lord Rama tells Hanuman to go to Lanka, find Sita and give her his ring, Hanuman understands that Lord Rama wants to reassure Sita that he is on his way to save her. When Hanuman lands in Lanka, he notices a damsel in distress surrounded by Rakshasis in the Ashoka gardens. Seeing how dejected she looks, Hanuman concludes that she is Sita. Instead of approaching her to pass her the ring, he waits for the Rakshasis to leave first. Once they have left, Hanuman shrinks himself to the size of an ordinary monkey because he doesn't wish to frighten Sita by appearing in his gigantic form. Before approaching Sita, he first starts singing Rama's praises softly to make Sita's mind more receptive towards him. Only then does he approach Sita. And even then he guesses that Sita might not readily believe that he is Rama's messenger. So he shows her Rama's ring and reveals information about Rama that only a trusted messenger would have. Hanuman does not try to save Sita from captivity, even though he could have. He is more than capable of doing so. But he wants all the glory for Sita's eventual liberation to go to Rama. So in each and every step, Hanuman demonstrates discretion, intelligence, intuition, and a deference to Rama, his guru. Amma often talks about sahacharya buddhi, which means situational intelligence, the ability to size up a situation before acting. Hanuman proved through his actions that he had keen situational intelligence. When Sage Narada says Nitya Kanta, he means like an eternally devoted wife or a consort. For most of us, words like spouse or consort of wife or husband or lover
Such words have certain worldly or even carnal connotations. But this is not what Narada means. The attitude of seeing God as one's lover, known as the Madhurya Bhava, is usually found in women devotees. Examples are Radha, Andal, and Mirabai. To be sure, there have also been male devotees like Chaitanya Mahaprabhu, who embodied Radha's longing for Krishna. There was also Jayadeva, the author of the Gita Govinda, who wrote exclusively in a female devotional voice. And there was, of course, Sri Ramakrishna Paramahamsa, who dressed and lived like a woman for a while, cultivating the mood of a gopi or a consort of Lord Krishna. It is hard to understand such an attitude. That's why some people say to this day that Jayadeva's poetry is erotic. But the wise say that the Madhurya Bhava, also known as bridal mysticism, is nothing but Advaita or non-duality. It's an exalted state in which the devotee loses his or her identity and becomes one with God. Sometimes Amma sings, Krishnanum Radhiyam Vereyanu, Radhiyam Krishnanum Veridamu, which means, are Krishna and Radha separate? Can they be separated? One can talk about multiplicity in the physical realm, but in the purely spiritual realm, there is only God, and that is the realm of the Nityakanta, which is a difficult state to understand unless the mind is pure. It's better to try and become a Nitya Dasa or a Nitya Dasi, an eternal servant to God. Thank you. देवी दया करो माँ, जय माता मृदेश्वरी माँ। 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 दुख निवारो मैया, तेरी भक्त जनों के मैया। दुख निवारो मैया,
भक्तजनों की मैया, दुख निवारो मैया तेरी भक्तजनों की मैया, दुख निवारो मैया तेरी भक्तजनों की मैया, मंगलकारिणी माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ, 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 देवी दया करो माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ, दया करो माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ, देवी दया करो माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ, देवी दया करो माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ, दुख निवारो मैया तेरी भक्तजनों की मैया, दुख निवारो मैया तेरी भक्तजनों की मैया, मंगलकारिणी माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ, 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 देवी दया करो माँ जय माता अमृतेश्वरी माँ। गणेश जय लंबोदर विष्णु, जय गणेश जय पतंग जय लंबोदर विष्णु, जय गणेश जय पतंग जय लंबोदर विष्णु, जय महेश सुत पार्वती नंदन जय विघ्नेश विभो, 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 जय गणेश जय पतंग जय लंबोदर विष्णु, जय गणेश जय पतंग जय लंबोदर विष्णु, जय महेश सुत पार्वती नंदन जय विघ्नेश विभो, जय महेश सुत पार्वती नंदन जय विघ्नेश विभो, विघ्नराज तुम भीमकाय तुम दे दो विजय हमें, विघ्नराज तुम भीमकाय तुम
दे दो विजय हमें। विघ्नराज तुम भीमकाय तुम दे दो विजय हमें। विघ्नराज तुम भीमकाय तुम दे दो विजय हमें। प्रणव रूप तुम वक्रतुंड तुम हमको तुम वर दो। प्रणव रूप तुम वक्रतुंड तुम हमको तुम वर दो। जय गणेश जय कतंग जय लंबोदर विष्णु। जय गणेश जय कदंब जय लंबोदर विष्णु। जय महेश सुत पार्वती नंदन जय विघ्नेश विभो। जय महेश सुत पार्वती नंदन जय विघ्नेश विभो। स्वर्ण वर्ण तुम देव पूज्य तुम मूषिक वाहन तुम। स्वर्ण वर्ण तुम देव पूज्य तुम मूषिक वाहन तुम। स्वर्ण वर्ण तुम देव पूज्य तुम मूषिक वाहन तुम। स्वर्ण वर्ण तुम देव पूज्य तुम मूषिक वाहन तुम। धर्म बुद्धि दो दिव्य दृष्टि दो सर्व विघ्न हर तुम। धर्म बुद्धि दो दिव्य दृष्टि दो सर्व विघ्न हर तुम। जय गणेश जय कतंग जय लंबोदर विष्णु। जय गणेश जय कदंब जय लंबोदर विष्णु। जय गणेश जय कतंग जय लंबोदर विष्णु। जय गणेश जय कदंब जय लंबोदर विष्णु। जय महेश सुत पार्वती नंदन जय विघ्नेश विभो। 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 बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला। नंद कुमारा नवनीत चोरा वृंदावन संचारी। 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 यदुकुल नायक गोप कुमारा यमुना तीर विहारी। 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 बोलो 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 गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला। बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला। कल्मषनाशन हे मधुसूदन करुणामय कंसारी। कल्मषनाशन हे मधुसूदन करुणामय कंसारी। कल्मषनाशन हे मधुसूदन करुणामय कंसारी। कल्मष
गोपाल हे मधुसूदन करुणामय कंसारी नित्य निरामय भव भय मोचक पाप विमोचन देवा 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 बोलो 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 गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो गोकुल बाला गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला बोलो बोलो नंद कुमारा गोपाला जय गोपाला 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 गोविंदा जय गोपाला गोविंद जय गोपाला गोविंदा जय गोपाला गोविंद जय गोपाला शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो परमेश्वराय शशिशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो भावाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो भावाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो शिवाय परमे
परमेश्वराय शशिशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमो भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो हराय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमो शिवाय परमेश्वराय शशिशेखराय नमो जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी जय गौरी देवी रणचण्डी देवी हे शिवरमणा जागो हे गौरी देवी रणचण्डी देवी हे शिवरमणा जागो जय गौरी देवी रणचण्डी देवी हे शिवरमणा जागो जय गौरी देवी रणचण्डी देवी हे शिवरमणा जागो 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 जय जगदोधारिणी माँ जय जगदोधारिणी माँ जय जगदोधारिणी माँ जय जगदोधारिणी माँ जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी माँ जगदोधारिणी माता दुर्गा
जागो जागो माँ जननी। जय गौरी देवी रणचंडी देवी हे शिवरमणा जागो माँ। जय गौरी देवी रणचंडी देवी हे शिवरमणा जागो माँ। हे शिवरमणा जागो माँ। हे शिवरमणा जागो माँ। जय जगदोधारिणी माँ। जय जगदोधारिणी माँ। जय जगदोधारिणी माँ। जय जगदोधारिणी माँ। जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी माँ। जय जय जगजननी वन्दे अमृतानन्दमयी। मंगल आरती मात भवानी अमृतानन्दमयी। माता अमृतानन्दमयी। जन मन निज सुखदायिनी माता अमृतानन्दमयी। मंगलकारिणी वन्दे जननी अमृतानन्दमयी। माता अमृतानन्दमयी। सकलागम निगमादिशोचरिते अमृतानन्दमयी। निखिलमय हर जननी वन्दे अमृतानन्दमयी। माता अमृतानन्दमयी। प्रेमरसामृत वर्षिणी माता अमृतानन्दमयी। प्रेम भक्ति संदायिनी माता अमृतानन्दमयी। माता अमृतानन्दमयी। शमनवदायिनी मनलयकारिणी अमृतानन्दमयी। सततं मम हृदि वसतां देवी अमृतानन्दमयी। माता अमृतानन्दमयी। पतितोद्धार निरन्तर हृदये अमृतानन्दमयी। परमांस पदनिलये देवी अमृतानन्दमयी। माता
श्रुतजन परिपालिनी जयता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी सुरजन पूजित जय जगदम्ब अमृतानंदमयी सहज समाधि सुधन्ये देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी ओम जय जय जगज्जननी वन्दे अमृतानंदमयी मंगल आरती माता भवानी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी जय बोलो सद्गुरु माता अमृतानंदमयी देवी की ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 ओम लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम Om Amriteshwari Namaha. The society wishes to thank Ayudh for sponsoring today's puja. The society also wishes to thank Kartik and family for today's Annadanam. The society also wishes to thank the following sponsors. Online sponsors: Martina Radha Sturm Germany, Raghunathan G. Pillai Singapore, Madhava Rao Kudipati UAE, Sudeep Dharan Singapore, Rubavati Muthu Singapore, Geeta Santosh Singapore, Usha Balachandran Nair Singapore, Kartyayani Rudran Singapore, Arthur Vasilian Australia, Claudia Rodriguez Alves Brazil, Mark Symbolist Australia, Sagar Dharan Singapore, and Kristen from the United States. Flowers and garland sponsors: Martina Radha Sturm, Raghunathan J. Pillai, Madhava Rao Kudipati, anonymous donor, Lily Nadarajan, Sachidanandan, Saima Shivan. Puja item sponsors: Raghunathan J. Pillai, Madhava Rao Kudipati, anonymous donor, Darshini and Shashi. Donors: Kavita Somasegaran, Raghunathan J. Pillai, Madhava Rao Kudipati, Sarla Nair, Sudeep Dharan, Suresh Menon. We humbly invite devotees to come forward and offer their loving support by sponsoring our upcoming Sunday satsangs and contributing to the Annadanam program.
The next Kārtikā Pūjā will be held on Sunday, 14th of June at 10 a.m. This will be elevated into a grand Bhagavati Seva Puja, a deeply auspicious occasion to deepen our collective devotion to Amma. We warmly invite you to join us for a beautiful morning of sacred chanting, heartfelt prayers, and vibrant community spirit. A sumptuous North Indian thali lunch will be served after the puja. We look forward to celebrating with you. Om Amriteshwari Namaha.